learned in last lecture in contract costing. Contract costing, very essential important item is contractee. He is the person, okay, is the owner of the project, and sometimes called a client or a principal or other entity that enters into a contract with a contractor. So is a person who is assigning the contract to the contractor. So and contractor is a person or a company who undertakes a contract to do work or provides goods or services for client or the principal. So contractor is, we can say, the seller, and contractee is a buyer. Contract is a buyer and contractor is a seller. So this can be understand in different manner, that contractor and contractee relationship is like buyer and seller. So we need to understand this. Thereafter, the main purpose, whole thing is related with the contract price. So the contract price is the amount agreed between contractor and contractee. So this is the amount agreed between contractor and contractee. Then the person called architect, architect who is appointed by the contractee to certify the contract. So after architect, the important thing to understand is work certified. Work certified, this is the work completed by the contractor and certified by the architect. This amount which is certified by the architect, very important term is, because in case of work certified we are following the selling price, and the second concept is work uncertified. Work uncertified means work completed by the contractor but not certified by the architect. So this is valued at cost price. So here the cost price or the selling price is very important. Sometimes somehow they may ask you the question related with the work certified and work uncertified. And for that purpose or objective questions, we need to understand this concept, that valued at, I can write here, valued at selling price and valued at cost price. So very important terminologies to understand, that work certified and work uncertified. Thereafter, the part of retention money. Retain means to hold on. So this is the amount which is the difference between the work certified and the cash received, because the contractor will not get the whole amount of work certified, that his amount will be retained till the completion of the contract. After completing the contract, so retention money is amount held back from a payment made under the construction contract. So here we need to understand that retention money is will be paid in future. It is generally held by the contracting. So these are very important concept we need to understand while doing the contract costing. Always जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करें, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टी कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, आर्किटेक्ट का रोल क्या है, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड कितना अमाउंट है, कैसे वैल्यू करने का है, रिटेंशन मनी का परसेंटेज दिया है क्या, समटाइम्स दे मे गिव यू द परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड, तो दैट कैश रिसीव्ड परसेंटेज का डिफरेंस जो है, that is your retention money. So this is how we need to understand about contract costing concept. Now one important aspect is we are always following in the books of contractor. Here I am giving an example. So
With this illustration, we can understand Messrs. Rajan and Company undertook a contract for rupees 2,50,000 for constructing a building. Here, the amount 2,50,000, amount 2,50,000 is your contract price. Undertook a contract. I'm making it bold and with red. And this is Messrs. Rajan and Company who undertook the contract. They are contractor. So in the books of Rajan and Company, we need to prepare the contract for 2,50,000 constructing a building, and following are the information related to the so this is what information is given. You can understand. I'm reading this part. It may require little more visibility, so I'm increasing the size of letters. Now so as per particulars given here, we are starting the concept materials sent on site. This should be the expenses which are recording on the debit side of the contract account. Then labor engaged on site, again the part of debit side. Plant install at site at cost. As per the format, we understand that we are recording opening plant at debit side and closing plant at credit side. That means ultimately we are getting depreciation, but this is how we are presenting. Then direct expenses on the debit side of contract price, other charges on the debit side of contract price. Thereafter, material returned to store, it should be posted to credit side. All other expenses should be posted on debit side, but this should be on credit side. I'll write here. So all these expenses should be placed on debit side. Okay. Work certified, it should be placed on credit side. Value of plant, it should be placed on credit side as on 31st December. This is what the credit side. Then work, cost of work not yet certified, that means work uncertified. We're talking about work uncertified, that has to be placed on credit side. Material at site, again the part of credit side. Wages accrued, outstanding wages, add to the wages, so debit side. Direct expenses accrued, again it will be part of expenses, debit side. Cash received from contractee, this is the amount received from contractee. We don't know what is the percentage of cash received, but we can get it through understanding the concept of work certified. Look at here, work certified is 1,95,000, and out of that cash received is only 1,80,000. That means 15,000 are called as retention money. We can find out this percentage like this: 1,80,000, which is your cash received, upon 1,95,000, which is your work certified, multiplied by 100. That means 92.31 percentage is your percentage of cash received. But if amount are given, we are going to place the amounts. Otherwise, you can write 92.31 percentage also. Thereafter, prepare contract account and show how the various figures will appear in the balance sheet. Now listen to this, how it will be appear. They are not asking you to tally the balance sheet. This is what the change is. We need to get out extract of balance sheet, okay, of Messrs. Rajan and Company on 31st December 2018. So we need to prepare contract account and balance sheet account, and for that we are going to make a format like this.
So prepare the contract account in the books of. So this is how we are solving the problem. Solution. As per solution, in the books of Messrs. Rajan and Company, this is why we required to understand whose books. So in the books of contractor, we are preparing contract account, and I'm writing over here in the bracket contract price is rupees 2,50,000. So this is your debit side and the credit side. Okay. So as per debit side, we need to put up all expenses which are related to the contract. So material sent on site, labor engaged on site. In the case of labor, again the outstanding labor are there, so that needs to be added. Then installation of plant, direct expenses, again the accrued direct expenses are there. So we need to understand that part and should place accordingly. So here I'm minimizing little bit to understand and get these things done in this. So I'm writing first part, to material sent on site. Second, to labor engaged on site. But we can write it in a inner column and add this again, like to outstanding wages, which is given over there. Accrued wages is 2,400. Thereafter, plant install at site. So when we are writing our plant, this is what the opening balance of your plant. Then direct expenses, which have another part of outstanding expenses that needs to be added back. So प्लान के साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड करना है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद 240 रुपीज का. This is the amount needs to be added as outstanding expenses. Outstanding expenses. I'm trying to make it uniform as per the format. Then outstanding expenses, other charges needs to be placed over here. This is amount recorded over here. Now in case of credit side, work in progress. Normally the amount of work in progress we are getting through, we can make two accounts, two columns, like inner column and outer column. It can be placed as work certified and work uncertified. And again, materials at site. I'm writing over here work certified amount is 1,95,000.
Thereafter, work uncertified 4,500. Thereafter, material at site on 31st December 1,880. 1,880 rupees. Thereafter, these three should be added. 1,95,000 plus 1,95,000 plus 4,500 plus 1,880. So total of this all is 2,01,380. 2,01,380. So this is your amount of work certified, work uncertified, and material at site. Thereafter, the value of plant as on 31st December. So by value of plant, so which is at the end of the year is 11,000, writing in outer column. So value of plant 11,000. So material returned to stores, that should be posted to credit side. Buy material returned to stores. Amount 552. So each and every item of this expenses side, material, labor, plant, direct expenses, other charges, material return to store, work certified, value of plant on 31st December, cost of work not yet certified, material at site, wages accrued, direct, cash received, and should be taken place ahead. So first we need to understand which is the highest side. So as per the information getting, so 84,786 plus 74,152, 2,400, 15,000, 3,201, 240, 4,878, 4,878. So total of all these numbers are 1,84,650, and this side 2,01,000 plus 11,000 plus 552. So this side will be 2,12,932. 2,12,932. Let's check it again. 2,12,932 is the total of credit side, which is quite higher. So the credit side is greater than debit side. That's why we need to prepare the balancing amount. So 2,12,932. So 2,12,932 minus 1,84,650, 28,275. 28,275 is considered as to notional profit, which is normally carried down. This notional profit is carried over here by balance carried down, or we can say balance brought down as a notional profit, which is 28,275. So as per the credit side,
28,275 is the profit now, which needs to be posted either to profit and loss account. For transferring profit and loss, we need to understand the percentage of work done, कितना काम हुआ है. But for that, we need to make a working note. So as per working note, we will prepare that. And the balance amount to provision for contingency. Which is called as provision for contingency reserve. Which will be the balancing amount out of this 28,275. So this 28,275 should be considered while posting this profit. Now ये होता क्या है हमारे पास, I'm just trying to explain this. ये फिगर्स मैं हटा रहा हूँ, हमने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया था यहाँ पे. सो हमारे पास ओवरऑल क्रेडिट साइड ग्रेटर था, मतलब हमारे डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस है वो प्लेस करने के बाद क्रेडिट साइड के आइटम हमारे ज्यादा है. सो क्रेडिट साइड के आइटम में से डेबिट साइड माइनस किया तो 28,275 ये हमारे लिए प्रॉफिट दिख रहा है. क्रेडिट साइड इज इनकम साइड, बट सिचुएशन इज दैट unless and until the whole contract is completed. यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2,50,000 का और वर्क certified at 1,95,000 का. What does it means? Work certified is less than the contract price. That means contract is still ongoing. इसीलिए तो work in progress account बना रहे ना हम लोग. यहाँ पे हमारे पास work in progress का account इसलिए बना है क्योंकि हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले, अगले साल वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा. क्योंकि ये साल कितना सर्टिफाइड हुआ है, 1,95,000 का सर्टिफाइड हुआ. अभी भी 55,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना बाकी है, लेकिन अनसर्टिफाइड में कुछ अमाउंट है. अभी तो हमारे पास दोनों अमाउंट अवेलेबल है, सो देयर इज नो इश्यू रिलेटेड विद दैट. सो टोटल हमारा जो क्रेडिट साइड का है वो 2,12,932 है. आउट ऑफ दैट हमने जो लेस किया वो बचा 28,275. तो ये पूरा हम लोग प्रॉफिट नहीं ले सकते क्योंकि 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. तो सिमिलरली to understand how much profit to be transferred, we need to calculate work certified percentage. तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड के कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देख सकते हैं. वर्क सर्टिफाइड के परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है, सो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड मिलेगा. एंड 1,95,000 इंटू अपॉन 2,50,000 इंटू 100 करेंगे तो 78% हमारा वर्क सर्टिफाइड मिलेगा. अगर 78% वर्क सर्टिफाइड है तो नॉर्मली हम लोग कितना परसेंट प्रॉफिट ले सकते हैं, जब हमारा प्रॉफिट 0 to 24.99% रहता है तो हम लोग कोई भी प्रॉफिट नहीं लेते, नो प्रॉफिट. जब हमारा प्रॉफिट 5 to 49.99% है तब 1/3 इंटू बैलेंस इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड लेते हैं. और जब हमारा प्रॉफिट मोर देन 50% है एंड लेस देन 100% है तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमारे लिए 2/3 प्रॉफिट लेना नॉर्मल है. सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस हम लोग कर सकते हैं 2/3 इंटू 2/3. So 2/3 upon
यहाँ पे 2/3 करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा फॉर्मूला बनेगा 2/3, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। So 2/3 into notional profit into cash received upon work certified. So this is what the amount is given over here. So ये हमारा 2/3 into 28,275 into 182 जो हमारा कैश रिसीव है, 82 और 80 है। तो इंफॉर्मेशन में 1,80,000 गिवन है। तो इसका कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग देखेंगे 28,275 into 2 divided by 3, 18,850, और जो 18,850 आएगा उसका 180 अपॉन 195, 17,400। सो ओवरऑल 17,400 ये हमारा बैलेंस जो मिलता है, $17,400। This is the amount to be transferred to profit and loss account. तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अगर हम लोग 17,740 डालेंगे तो बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व, ये बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व कितना आएगा? तो उसके लिए हम लोगों को टोटल अमाउंट कितना था, 28,275 माइनस 17,400 करना पड़ेगा। तो ये करके जो बैलेंस आएगा वो हमारा 10,875 है। सो 10,875 हमारे लिए रिजर्व्स में चला जाएगा। सो हियर आई वुड लाइक टू मेंटेन 17,400 and the balance is 10,875. So both has been taken place with the help of working note. After this working note, we need to understand the extract of balance sheet. हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। Extract of balance sheet with the help of liabilities, rupees, asset, rupees, rupees. Like to present something like this. दोनों हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इनर और आउटर कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग असेट साइड में इनर और आउटर दोनों बना रहे हैं। हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग इनर आउटर नहीं बना रहे, which is very simple. So
Now, when we are talking about assets, the first part as per asset plant, okay, right at the end of the year, which is closing plan, which is given over there 11,000. ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, प्लांट हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ प्लांट 11,000 बचा है, हमने डेप्रिसिएशन लिखना था लेकिन thereafter we need to understand the concept of WAP. WAP is stand for WAP, W वर्क इन प्रोग्रेस. सो वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट हमारे पास है, उसमें से लेस होगा एडवांस रिसीव्ड. एडवांस रिसीव्ड क्या होता है? एडवांस रिसीव्ड, द अमाउंट रिसीव्ड in the form of cash, which is 1,80,000. So 1 lakh 2,80,000, sorry 2,01,380 minus 1,80,000. So हम लोग ultimately यहाँ पे लिखेंगे this minus this. So quite difficult हो जाता है वैल्यू आना. 2,01,380 minus 1,80,000. So 21,380. तो यहाँ पे हम लोग हमारे जो भी कॉलम्स है वो प्रिपेयर करते जाएंगे. इसके बाद वैप में P, P स्टैंड फॉर लेस, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी. हमारा प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, दैट वाज अराउंड 10,875. तो हमारे फॉर्मूला में से 10,875 और माइनस हो जाएगा तो 10,505 ये बच जाएगा. सो आउटर में वैट में से वेटेड एवरेज कॉस्ट माइनस एडवांस इनकम रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड लेस प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, इस सब में जो बैलेंस बचा है दैट इज योर अमाउंट नीड टू बी प्लेस. सो वर्क इन प्रोग्रेस लेस एडवांस रिसीव्ड लेस प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी ये डाल दिया. तो हमारे क्रेडिट साइड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं, हमारे पास प्रॉफिट हुआ, रिजर्व सरप्लस है ना. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 17,400 का बैलेंस है. तो 17,400 एज ए प्रॉफिट एंड लॉस. आउटस्टैंडिंग के दो आइटम थे हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 240, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400. सो लायबिलिटीज में आएगा, एक था आउटस्टैंडिंग वेजेस, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. So outstanding wages was given 2,400 and this was 240. और क्या आ सकता है हमारे बैलेंस शीट में? मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स. ओके, so this will also part of your, जो हमारे पास मटेरियल रिटर्न आया है स्टोर्स में वो अमाउंट भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 552. तो ये अमाउंट
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो बैलेंस शीट में आने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज का आइटम है, और वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट, एंड नथिंग एल्स। तो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट विदाउट टैलिंग इट। यहाँ पे कॉस्टिंग में जो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये समझने बहुत जरूरी है कि बैलेंस शीट जो बना रहे हैं वो दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट और कंप्लीट बैलेंस शीट, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिसिंग है हमारे पास। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई है, तो हम लोगों ने उसका अकाउंट बनाया है। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट से हमें जो कैश मिला है उसका एंट्री आएगा, एंड बैलेंसिंग एज कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट अगर हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट हमारे पास सो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट रिलेटेड क्या बात आएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा दिया है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कैश आया है और देने वाला कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट है, तो वो बाय कैश और बैंक अकाउंट। सो कैश और बैंक कितना दिया है, 1,80,000, और यही 1,80,000 हमारे लिए और कोई अमाउंट नहीं है, तो यही बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा। और अल्टीमेटली जब हम लोग इसका बैलेंस क्लोज करेंगे, तो ये बैलेंस टू टू बैलेंस कैरी डाउन, तो हमारे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1,80,000। क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में दिखता जाएगा। So this is how we are preparing our contract account. First, we need to understand the parties to the contract. Thereafter, the work certified, uncertified terminologies. Then in case of illustration, we need to understand the placement. कहाँ पे हम लोग कौन सा आइटम को प्लेस करेंगे, उसका पोस्टिंग के बारे में जानकारी मिलने के बाद हम लोग उसका पोस्टिंग करने के बाद कास्टिंग करेंगे। और ये कास्टिंग का जो डिफरेंस रहेगा, अगर क्रेडिट साइड हायर है, इनकम ज्यादा है, तो इट विल बी प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड हायर है तो वो पूरा का पूरा लॉस होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे फॉर्मेट के हिसाब से देखा है कि हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इफ प्रॉफिट इज देयर, अगर आपका वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच का रिलेशनशिप पे मैटर करता है कि जब हम लोग उसमें से कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इफ द percentage of work certified lying between 0% to 24.99%, there will be no profit will transfer to profit and loss account. Everything will go to the contingency account. And if the profit is lying between, the work certified percentage lying between 25% to 49.99%, it will be charged 1/3 to the notional profit into cash received upon work certified. So in this case हमारे इस प्रॉब्लम में 78% हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ। 78% अगर वर्क सर्टिफाइड हुआ है, तो इसका मतलब है हमारा अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, जिसमें से नोशनल प्रॉफिट हमारा 28,275 है, कैश रिसीव्ड 180 है और वर्क सर्टिफाइड 195 है, तो वो हिसाब से 17,400 का हमारा अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। देयर आफ्टर जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया बचा हुआ अमाउंट है, दैट शुड बी पोस्टेड टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा रिजर्व जो क्रिएट होता है, हम लोग बैलेंस शीट में वैप में लिखते हैं, वेटेड एवरेज। वैप मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, पूरा
लेस एडवांस रिसीव्ड, लेस प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी। तो हमारा प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी भी डिडक्ट हो रहा है। सो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी एंड एडवांस इनकम, ये दोनों लेस करने के बाद जो बचता है वो हमारा टोटल अमाउंट हुआ। देयर आफ्टर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। तो ये बैलेंस शीट की जो आइटम है, एसेट्स, एसेट्स में, लायबिलिटी, लायबिलिटीज में प्लेस कर देना है। एंड द लास्ट वन इज अवर कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। ये जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है वो स्पेसिफिकली इसलिए बनाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टी का पोजीशन क्या है, कितना अमाउंट उससे आया है, कितना पेंडिंग है। सो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने एक इलिस्ट्रेशन देखा था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया था, कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया था, एंड हमने इसके आधार पे हमारा फॉर्मेट बना के उसमें अमाउंट को प्लेस किया, कास्टिंग किया, टोटलिंग किया, फिर कौन से स्लैब में, कौन से वर्क सर्टिफाइड और किस स्लैब में आता है, उस हिसाब से हमने प्रॉफिट को बांटा। ओके, दैट्स इट फॉर अ डे।